Good morning, viewers. I, Abhay Kumar, together with my dear colleague and fellow commentator, Dr. Alok Srivastava, welcome you again for the further live telecast of the remaining segment of PSLV C-35 mission with 8 satellites, 5 of them from our foreign customers from Algeria, Canada, and the USA. To give a recap, PSLV C-35 lifted off today at 9:12 a.m. Indian Standard Time, and around 9:31 a.m. the SCATSat-1 satellite of ISRO was injected into orbit. We now have the confirmation that SCATSat-1 injection was to a very precise orbit of 725 km circular as intended. After the injection of SCATSat-1, we started the preparations for the change of orbit to 670 km circular as required by the other satellites of this mission. To change the orbit, 2 restarts of the 4-stage is required. Towards this, at 10:37 IST today, that is some 66 minutes after SCATSat injection, we successfully restarted the PS4 for the required duration of 20 seconds and changed the orbit from 725 circular to 725 by 670 km elliptical. This was confirmed from Svalbard ground station of Norway. Now, after another 49 minutes, that is around 11:24 to 11:25 a.m. Indian Standard Time, the second restart will happen for another 20 seconds. After the shut-off of second restart, within about 207 seconds, all the satellites will be separated in a pre-planned sequence. The sequence of separation is ALSAT-1N, NLS-19, also called CANX-7, Pratham, PISAT, ALSAT-1B, ALSAT-2B, and Pathfinder-1 in that order. Around another 10 minutes later, the PS4 control will be finally put off after it has been passivated by venting out its remaining propellant, thus signifying end of PSLV C-35 mission about 2.5 hours from its liftoff. नमस्ते, एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अभय कुमार जी और मैं आलोक श्रीवास्तव फिर से एक बार MCC अभियान नियंत्रण केंद्र में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह T0 माने 9:12 पर प्रक्षेपण के बाद 4 चरणों वाले प्रक्षेपण यान PSLV C-35 ने सभी गतिविधियों को अभीष्ट रूप से अंजाम दिया। लगभग 10:29 पर स्कैटसैट के कक्षीय अंतःक्षेपण 9:29 पर ऑर्बिट इंजेक्शन के वक्त हमने आपसे विदा चाही थी और तब से लेकर अब तक घटी हुई गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा अगर मैं देना चाहूं तो स्कैटसैट के अलग होने के बाद लगभग 64.251 मिनट पर चौथे चरण के पुनः दहन को स्वीकृति मिली, जो करीब 19.86 सेकंड तक चला। आज हम स्कैटसैट के साथ जिन 7 अन्य विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करेंगे उनकी योजनाबद्ध तैयारी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने कर ली थी। इसरो के इतिहास में अब तक का यह सबसे लंबी अवधि का प्रक्षेपण होगा। हालांकि इसरो एक ही अभियान में 20 उपग्रहों को एक साथ पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर चुका है, पर इस बार चुनौती बिल्कुल अलग है। इस बार एक ही प्रक्षेपण में अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को भेजा जाना है और ये घटना ये पूरी की पूरी संभावना को तलाशने के लिए हमने एक बार उत्तरी ध्रुव पे और एक बार दक्षिणी ध्रुव पे 2 बार दहन करने की बात सोची थी। इसका मतलब यह है कि चौथा चरण बंद होने के बाद इसको कई बार स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना एक तरह से मल्टीपल बर्न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है और इसरो ने पिछली बार PSLV C-34 मिशन के दौरान रॉकेट के चौथे चरण के इंजन को एक बार उत्तरी ध्रुव और एक बार दक्षिण ध्रुव के चालू कर इस तकनीक को पुख्ता कर लिया था। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो तकनीक के रॉकेट के इंजन में प्रज्वलन पैदा करने के बाद उसे स्विच ऑफ करने और फिर से स्विच ऑन करने की तकनीक हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। एक बार रॉकेट इंजन में दहन पैदा होने के बाद उसमें बड़े पैमाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। अंतरिक्ष में उसे स्विच ऑफ कर उसे ठंडा करना और थोड़े अंतराल के बाद पुनः चालू करना बेहद कठिन होता है, मगर यह भी संभव हो गया और हमने दूसरी बार सफलतापूर्वक इंजन को करीब करीब 20 सेकंड तक ऑन रखा, स्विच ऑन करके रखा और इस तरह से हमने 3 चीजों को बदलना चाहा है। दूसरा जो दहन है वो बहुत ही शीघ्र होने वाला है। हमने उसकी ऑर्बिट की ऊंचाई को बदला, ऑर्बिट की जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, उसको बदला। 98.095 अपेक्षित था स्कैटसैट-1 के लिए। उसके बाद स्टार्ट 1 होने के बाद 98.154 इंक्लिनेशन रहा डिग्री और अब रीस्टार्ट होने के बाद 98.20 डिग्री
इंक्लिनेशन हो जाएगा। और दूसरी जो तीसरा पैरामीटर जो बदलेगा ऊंचाई और इंक्लिनेशन के साथ में, वो होगा मेनली मुख्य रूप से राइट एसेंशन ऑफ असेंडिंग नोड या रॉन जिसको कहा जाता है, वो 263.9818 से बढ़ के 266.882 तक पहुंच जाएगा जब DLAU सेपरेशन या डुअल लॉन्च अडाप्टर सेपरेशन होगा। तो I shall now briefly introduce to you our satellites from our customers. The ALSAT 1B, weighing 103 kilograms, is an Algerian Earth observation satellite based on SSTL-100 platform. So the satellite provides 12-meter ground sampling distance, 5-meter multispectral imaging payload with a 150 kilometer swath coverage. It is meant for medium spatial resolution and high temporal resolution imaging with a frequent revisit to any point on Earth to monitor the rapidly changing phenomena associated with natural and man-made disasters, agriculture, as well as environmental issues. We are a few minutes away from our secondary start, and the second microsatellite is the ALSAT 2B, which is part of an Algerian program based on two similar low Earth orbit satellites for remote sensing, ALSAT 2A and ALSAT 2B. Its mission is an optical Earth observation of Algerian territory with a resolution of 2.5 meter in panchromatic mode and 10 meter in multispectral mode. The Pathfinder 1 is a 45 kg high resolution imaging microsatellite from Black Sky, a commercial company from the USA. This satellite is an initial demonstration of the Black Sky imaging systems, which features a ground resolution of 1 meter. The satellite is equipped with onboard propulsion for orbit maintenance. Next, we have the NLS-19, also called CANX nanosatellite, weighing 8 kilograms. It is a technology demonstrator for the Spaceflight Laboratory at the University of Toronto Institute of Aerospace Studies, Canada. The satellite will conduct two experiments. The primary experiment is a drag sail deorbit device that can be used on future missions to reduce space debris. The secondary experiment is an ADS-B receiver that is used for tracking commercial aircrafts. The final commercial satellite is ALSAT 1N. It is a 7 kg technology demonstrator nanosatellite built and launched as part of educational program for Algerian students. The technology demonstrator payloads include astrotube deployable and retractable boom, compact CMOS camera demonstrator, and thin film solar cell. Plus 2 hours 10 minutes. जी हाँ, एक तरह से अगर हम कुल समय की बात करें तो हम काउंटडाउन के बाद लगभग 2 मिनट 10 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं, और स्कैटसैट के सफल प्रक्षेपण के बाद उसकी कक्षा बहुत ही अभीष्ट रूप से जो चाही थी, अभीष्ट रूप से जो इच्छा की गई थी, वो मिल चुकी है। और उसके बाद जो शेष 7 उपग्रह हैं उनमें 2 उपग्रह हमारे भारत के हैं, IIT बॉम्बे मुंबई के प्रथम, और पाईसैट जो PES यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बेंगलोर का है। ये दोनों उपग्रह भारत से हैं, जबकि शेष 5 उपग्रह विदेश से हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अल्जीरिया के 3 उपग्रह ALSAT 1N जिसका भार करीब 7 किलोग्राम है, ALSAT 1B जिसका भार 110 किलोग्राम है, और ALSAT 2B जिसका भार लगभग 120 किलोग्राम है। इसके साथ ही अमेरिका का एक वाणिज्यिक जो इकाई है वहां की, बेसिकली ब्लैक स्काई कंपनी जो है अमेरिका की, वाशिंगटन की, उस कंपनी का एक उपग्रह पाथफाइंडर 1। ये पाथफाइंडर 1 आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, मार्स पाथफाइंडर से बिल्कुल अलग है। इसका भार लगभग 50 किलोग्राम है। और इसी के साथ जो अंतिम उपग्रह छोड़ा जाना है विदेश का, वो है कनाडा का NLS-19 या CANX-7 जो दूसरे नाम से जाना जाता है। ये 7 उपग्रह किसी भी क्षण जब दूसरा दहन हो जाएगा, उसके बाद कुछ ही क्षणों में मुश्किल से 30 सेकंड, 10 सेकंड, 80 सेकंड, 10 सेकंड, और इसी अंतराल के समय में शेष 7 उपग्रह को The restart of the mission has been confirmed. दूसरा दहन भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है, और अब बारी है, अब प्रतीक्षा है इन 7 उपग्रह के प्रक्षेपण की। Another 10 seconds, the PS4 will be shut off, and then in a pre-planned sequence, the satellite separations will start. जी हाँ, केवल कुछ ही क्षणों में चौथे चरण के इंजन को बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद इंजेक्शन अंतःक्षेपण,
जिसकी प्रतीक्षा सारे विदेशी और देशी कस्टमर जो हैं वैज्ञानिक वो बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। इनकी जो ऊंचाई होगी वो करीब करीब 690 किलोमीटर की होगी और जो इनका राइट असेंशन ऑफ असेंडिंग नोड होगा वो करीब करीब अगर हम उचित भाषा में कहें तो करीब करीब 266.882 डिग्री होगा। इस समय हम बहुत ही करीब इस छोटे से महत्वपूर्ण घटना के जब इस सातों Plus 2 hours, उपग्रह 13 minutes. 2 घंटे 13 मिनट का समय व्यतीत करते हुए उचित क्षण का इंतजार। वैसे अगर मैं बात करूं तो Sat 1N separated. अल्सैट 1N अलग हो चुका है। Yeah, the next satellite to be separated immediately in another 20 seconds is NLS-19 NLS or 19 Canex. is separated. NLS 19 भी अलग हो गया, 19 भी। इसके बाद IIT बॉम्बे का प्रथम नामक उपग्रह भी अलग होने की कगार पर। In another 60 seconds, we are going to eject Pratham. Right now, PS4 is being reoriented towards a favorable direction in which the remaining satellites can be ejected. जी हाँ, ये IIT बॉम्बे का उपग्रह यूं तो बहुत पहले इसकी परियोजना 2007 में शुरू हो गई तो 2012 में इसे तय था, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इसमें विलंब रहा। संसाधन, मानव संसाधन की Plus 2 कमी hours, 14 minutes. और प्रशासनिक विलंब और तकनीकी विसंगतियां कुछ कारण थे। इसे 4 महीने के मिशन पर भेजा जा रहा है और 720 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होने के बाद प्रथम उपग्रह जो है वो इलेक्ट्रॉनों की गणना करेगा। पाईसैट अन्य उपग्रह जो भारतीय विश्वविद्यालय का है वो भी इसके तुरंत बाद अलग होना है। Any moment now, we will hear the confirmation of the separation of the Pratham satellite built by students of IIT Mumbai, and also followed just 10 seconds later the separation of PISAT satellite built by the students of PES University, Bangalore. जी हाँ, वैसे कई उपग्रह इसरो भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए छोड़ चुका है। जी हाँ, प्रथम उपग्रह भी अलग। Pratham is separated. Another 5 seconds, you will have PISAT separation. इसके बाद बॉम्बे के बाद बैंगलोर की बारी। जी हाँ, Sat is separated. पाईसैट भी अलग। बैंगलोर को भी वो खुशी हासिल जिसकी उन्हें Plus 2 प्रतीक्षा hours, थी। 15 minutes. PISAT separated, and another 5 seconds, Alsat one ALSAT. be separated. ALSAT is now separated. अल्सैट 1B भी अलग हो चुका है। इसके बाद अल्सैट 2B की बारी है केवल मात्र 10 सेकंड के बाद। Just in 10 seconds, the ALSAT 2B from Algeria will be separated. We await the confirmation. It's now separated. Sat 2 जी be हाँ, separated. और इसके बाद केवल अंतिम उपग्रह अमेरिका का पाथफाइंडर 1। We have now only Pathfinder to be separated, which will happen anytime now. Pathfinder is now separated. जी हाँ, ये वो क्षण है जब 8 उपग्रह PSLV से बिल्कुल अलग सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। The mission is successful. All the mission objectives are accomplished. And now you will hear our chairman, Shri A.S. Kiran Kumar, addressing you. We from here say goodbye to you. Thank you for being with us. Have a good day. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वापस हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय सातों विदेशी जो उपग्रह थे, देशी और विदेशी, ने अलग किया जा चुका है और चेयरमैन इसरो राष्ट्र को और इसरो को संबोधित करेंगे। आइए इसके लिए हम आपको वापस अभियान नियंत्रण केंद्र के अंतर लिए चलते हैं, जहां पे सारे वैज्ञानिकों के बीच बिखरा उत्साह समेटने के लिए मैं एक बार फिर से आपको वहीं ले चलता हूं। Good morning to all of you. Today has been indeed a landmark day for us because today what we have seen using PSLV, we have been able to achieve launch of 8 satellites, our own scatterometer, which is actually a stopgap arrangement between our OceanSat 1 and OceanSat 2. This is a satellite which is going to provide ocean wind vectors to the global community for numerical weather forecasting models, and this data will be made available within 180 minutes of acquisition of the data. And along with this, we had 2 more of the Indian University satellite, Pratham and PISAT, and we had our customer satellite from Algeria, Canada and USA. And after a long gap of almost 2 hours, where the 4th stage has been maneuvered, it has been restarted, and the entire mission has gone on
very successfully. Let me take this opportunity to congratulate the entire ISRO team for the excellent job they have done. Keep it up. Now I request Shivan, Director VSSC, to say a few words. Good morning to all of you. Today, ISRO has done a wonder. This mission is an exciting mission, an excellent mission. It's the longest mission with the lowest dispersion. We got that orbital dispersion less than 1 kilometer, some unbelievable. And all our customer satellites are injected precisely in the required orbit. The special characteristics is even changing the local time of crossing equator. That's the first time ISRO has established this in orbital mission. All this excitement, excellent contributions only because of the teamwork of ISRO team members spread across all the centers, either VSSC, LPSC, IPRC, SHAR, as well as ISAC, then SAC. This mission has many extremes, like duration is extreme, maximum duration, and campaign duration was the shortest, and that accuracy what we got is lowest, many of these ones. So it's really very much satisfying mission, and I congratulate the entire team members of ISRO for the excellent work done, for the team effort, whatever you have given. In this moment, the contributions from industry for achieving this, the historic mission is eminent, and definitely they have supplied the hardware at the right time to make this mission feasible by shortest time. Now, with this, when we are reducing the schedule or increasing the accuracy, this is not the end. We are continuing to reduce, and the next mission, PSLV, the hardware is going to be delivered tomorrow by HAL, and already mission date is finalized on 28th, and we are thinking of reducing further down. Next mission, immediately we are having the historic mission, the GSD Mark III mission, the planning for this year end. Then we have the human in space program also. Like that, for the ISRO family, we have exciting days are ahead. I congratulate, compliment, please get ready for more and more excitement. Thank you very much. An exciting mission has been accomplished by PSLV, our most reliable and dependable workhorse of ISRO, by putting our scatterometer satellite, SCATSat-1, into the intended orbit of about 725 kilometers, and 5 satellites from abroad and 2 university satellites into a different orbit using the PS4 restart capability of PSLV C-35. Incidentally, today the 8th launch of ISRO in this year has delivered 8 satellites into the orbit. And as Dr. Shivan, Director of VSSC, has mentioned, this was the longest mission PSLV has ever done, 2 hours 15 minutes, but in the shortest launch campaign period of just 35 days. And this is for the first time 2 launches have taken place from Sriharikota in the same month. Behind all these convincing successes is the attitude of our ISRO family, the strong determination and commitments in pursuit of our final goal. Let me congratulate the entire project team, the whole ISRO family, the teams from various centers and units of ISRO, and also the industries for their immense contribution towards achieving this remarkable mission. My special compliments to our valued customers from different nations for their confidence in PSLV and offering their satellites to be launched from Sriharikota, working in conjunction and in synchronization with our ISRO team.
As it was mentioned, the coming days are going to be very hectic, very interesting, with a variety of missions, including the first developmental flight of GSLV Mark III. I am sure that the satellite launched today, the SCATSat-1, will provide augmented services to India and other countries also in the area of weather forecasting and meteorology. Thank you. In fact, PSLV has scripted history again today with the successful accomplishment of a very complex and the longest duration mission that PSLV has ever undertaken. Now typically any PSLV mission takes 20 to 25 minutes, whereas today this PSLV C-35 vehicle had to function for 2.25 hours. Of course, it has got its own associated technological issues, and there are so many peculiarities in today's mission. First of all, this mission management. It's a very complex mission that ever we have undertaken. The satellite requirement was the first main satellite has to be positioned at 720 kilometers. Then the remaining 7 satellites, they required a orbit of 670 kilometers. And this has been done, and there was an associated inclination correction also was there by 0.12 degree. Another interesting requirement was in this mission, the SCATSat-1 wanted a local time for the equator crossing of 9:18 hours, whereas the other satellites 9:30 hours. So we had to make the mission planning accordingly so that it will meet the SCATSat first, then on orbit it will stay, and a lot of complex maneuvering is to be done with the PS4 restart 2 times. Then provide the required orbit parameters for the other satellites, our customer satellites. So really that has been done very nicely and very professionally by our team. And of course, when you say, it is almost like having 2 launches. One lift off at 9:12 hours, and the second PSLV lifting off 12 minutes later. That is the 2 missions in a mission. This has been achieved today. This is the order of complexities we had today in today's mission. Now, in fact, when you say as a complexities, we have associated technical issues. Mainly the one is the mission planning and the mission execution that was very complex, and our team has done very nicely. Second one is the power management. That is because 2.5 hours, almost 2 hours, 2.25 hours, the mission has to function. The power augmentation was done. And the thermal management. You see this, when the vehicle is in space, one side will be seeing the hot sun. It will be receiving the heat, whereas the other side will be losing the heat. So there should be some thermal management, some passive thermal management has been done by our team. This has been done very efficiently, and I think altogether it's a very satisfying mission, and I'm sure with this flexibility what we have demonstrated today, PSLV will be very more competitive in the customer satellites because of so much flexibility it has got. Whatever the customer demands, we can provide. And let me take this opportunity to acknowledge the professional excellence contributed by our team ISRO, our senior members who has been always with us for guiding us and resolving our technical issues, and our industry friends who has played a major role in today's success. And let me also wish good luck to the satellite team for the early successful commissioning of the satellites. Thank you. Let me also join my colleagues in congratulating Team PSLV for this significant milestone, and also thank the various teams who have worked hard to realize this particular launch, including the industry participation. And without a major contribution from industries, such launches are not possible. This launch we had 5 commercial satellites, and this increasing number of commercial satellites coming into India for launch in PSLV is an indicator how this market is developing, and probably this will provide some thought to the industries in India how to get into these activities and then exploit
the potential of ISRO for enhancing the capabilities of the country in exploiting this market as well. The restart of the upper liquid stage and placing satellites in different orbits also has improved the marketability of PSLV, the flexibility and the versatility of PSLV, and this also puts PSLV in a very, very unique position of advantage. Let me also take this opportunity to thank all the teams in different centers, especially teams in LPSC and IPRC Mahendragiri, who has tested this PS4 restart capability, ground tested and qualified, and made this mission a grand success. Thank you. Respected Chairman ISRO, Center Directors, Seniors, colleagues and friends. Let me also join in congratulating all my colleagues from all ISRO centers for this wonderful achievement. PSLV C-35 has successfully placed all the satellites in very precise orbit, and inertial systems have played a very important, crucial role in achieving the precision. In fact, the first SCATSAT has been placed in circular orbit with 1 kilometer precision. This is one of the best missions from inertial systems point of view. And this is the culmination of all dedicated efforts of all ISRO teams across centers and industries and academic institutions. My hearty congratulations to all. Also, my sincere thanks to all our families and friends for their support. PSLV C-35 SCATSAT मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। इस SCATSAT के जरिए हमें समुद्र और उसके चलने वाली हवा के परस्पर प्रभाव के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इससे प्राप्त हुए डेटा से हमारे मौसम विभाग के वैज्ञानिक हवामान पर होने वाला असर और नैसर्गिक आपदा का सही अनुमान लगा सकते हैं। यह मिशन और भी वजह से कुछ अनोखा है। अल्जीरिया, कनाडा और यूएसए के उपग्रहों के साथ साथ आईआईटी मुंबई और पीईएस यूनिवर्सिटी के प्रथम और पायसैट ये छात्रों ने तैयार किए हुए उपग्रह छोड़े गए हैं, और इसके लिए जरूरी PS4 इंजन का सफलतापूर्वक पुनः प्रज्वलन एक बड़ी उपलब्धि है। आईआईटी बॉम्बे और पीईएस यूनिवर्सिटी के छात्र और अध्यापकगण को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। I wish all the satellite teams a great success in future endeavors. Thank you. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था की महानिदेशक और इसरो की बाकी सब केंद्र की निर्देशक और मेरे दोस्तों, पहले आपको सब लोग को बधाई इस शानदार प्रदर्शन के लिए। और इस पे हमारा नाज है कि हमने आज SCATSAT-1 जो सैटेलाइट भेजे उसका पेलोड हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पे बनाए। और इसका पहले ऐसे ही सितंबर महीना का तीसरा सप्ताह 23 सितंबर 2010 पे हम लोग OceanSat-1 भेजे थे जहाँ, और आज 2016 की सितंबर 26 को हम लोग आज उसी का उत्तर सूर्य SCATSAT-1 भेजे हैं। और हम जबकि सबको जैसे आशा रहती है बेटा पिता से बेहतर करेगी जिंदगी में, ऐसे हमारा भी आशा है जिस SCATSAT-1 और जो OceanSat-1 का जो OSCAT पेलोड थी उससे बेहतर परफॉर्म करेगी। और हमने उसमें जितने गलतियां जैसे कमियां हम देखे, हम उसी का सभी
जितने करेक्शन कर सकते हैं हम करके भेजे हैं। हमारा उम्मीद है वो और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा ये पेलोड। और एक चीज़ आपको बताओ, जब समुद्र पे घूर्णी होती है, चक्रवात होती है, तो जो बादल का घूर्णी हम लोग जो चित्र पे देखते हैं वो होती है जब चक्रवात बनने का 5-6 दिन बाद ही आप जब बादल बनती है तभी पता चलता है। और ये स्कैटसैट पेलोड ये 4-5 दिन पहले जब बादल नहीं बनी होगी तभी भी खाली वो हवा का ही घूर्णी है समुद्र का ऊपर, वो मुताबिक हमको बता सकता है। तो इसी से हमको जो चक्रवात का जो व्यवस्था है समुद्र का ऊपर, हमको 1 हफ्ता पहले पता चल जाएगी बादल बनने का पहले। और मेरे विश्वास है जो ओस्कैट 1 जो अनगिने जान माल का नुकसान से हमको बचाया था, इसका 4 और 4.5 साल का लाइफ में मेरे ख्याल है कि ये भी स्कैटसैट 1 और भी मानव जाति का सेवा पे समर्पित रहेगा। धन्यवाद आप लोग। Respected Chairman ISRO, Center Directors of ISRO, PSLV 35 SCATSAT team executives, members, and ISTRAC team members present there. Good afternoon, all of you. First of all, I would like to thank PSLV team for a wonderful job. Initially, we were discussing 9:30 orbit, time-wise we cannot match. Then I thank PSLV team, they have come up with 9:20 is a possibility. For them 9:30 orbit will give you, so not a problem, we'll go ahead with the mission. Subsequently, another 2 minutes advantage given to SCATSAT. So 9:18 is our local time now, thanks to PSLV team. Then SCATSAT project was sanctioned with a condition by Chairman ISRO, we need to build on a fast track within 16 to 18 months. I thank SCATSAT team, we have done the job within that time frame. Then I am very sure SCATSAT will do the intended job as designed, as envisaged. Is supposed to provide continuity service for OceanSat to Scattermeter, which unfortunately failed. This will give much, as Director SAC already told, lot of improvements have been done in this payload. I am very sure it will give a good, already grid size improved to 25 km from 50 km, and lot of other improvements have been done. I am very sure it will give good products, good service to national as well as international users. Many people are waiting for this payload. Jai Hind. Thank you, all of you. Now with this, we complete today's activity of the 8th launch this year, and as already pointed out, now we are gearing up for some more. On 4th of July, we have our GSAT 18 getting into orbit. Of course, this will be done by Ariane because the weight of the satellite is still more than what we can carry today. But we are making sure that GSLV Mark III, the first launch, is getting ready, and we are gearing up for launch of our Mark III launch vehicle at the earliest. Yesterday, I also saw here the initial activity of assembling the stages of the GSLV Mark III has commenced, and at various centers the work is going in full swing, and we will continue to deliver. Let me take this opportunity once more to congratulate the entire ISRO team for the wonderful job they are doing, and keep it up. Thank you.